Good evening, everyone, once again. And we hope that we've been able to overcome the technical issues. We're just doing a tech check before we actually start our conversation. I think we are live now, Ida. I can't see it on FB. I can see it on LinkedIn. Oh, we are live now. Yes. So I think we are live. We are back. Sometimes technology troubles you. It also says that, hey, See, where were you? We didn't see you for a very long time. And it's okay. I think many a times it gets you all flustered, but with patience, a lot of problems can be solved. And we just had that absolutely. experience. Absolutely. Absolutely. So we were talking, we came live earlier also, friends, but only the people on LinkedIn could watch us. So what we were talking about is that we are back after a long time. And of course, we were all busy with the festivities, but we also paused to reassess, relook at things as to where we are, where we were, and where do we intend to go. So while we were not live, you were not seeing us, but there was a lot of back end discussions that were happening between the team, be it regarding the activities, be it regarding our newsletter, Antarman, and a lot of other things, our social initiatives. So we did keep the team on the toes while we all enjoyed the festivals. And I think it's very important to reassess situation because only when you reassess things, you realize that either you're going right or you have wavered, and then you need to come back, relook at things, and then start again. What do you say, Ila? Absolutely. It's a must to step back, to take a break. बहुत ज़रूरी है ये देखना, ये एसेस करना कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं, वो एक सही रास्ता है कि नहीं, या जिस मंजिल की हमको तलाश है, उस पे हम सही ढंग से जा रहे हैं कि नहीं. There are shortcuts and there are no shortcuts. Absolutely. And also, I think sometimes, many of us think that this is the end of it. But as they say, that many a times the end actually might just be a bend, and there is a tunnel. I'm sure talking about tunnels, we are concerned about the people who are stuck, and a lot of efforts are going behind to rescue them. I guess these problems are also created by humans, and there is not much, anyhow, not the right forum to discuss about this. So we are here for a very special thing, for a special announcement, for a special share. And but before we do that, Ila, with your permission, I'd like to, take people back into history and share a Absolutely. few things. So we all know that at Motherhood Club we have something called as Culture Kona, which is extremely close to our heart. An initiative that was started by Ila, I think about 2 years back, where on a regular basis, many of us are writing poetry, stories, sharing our creative pursuits week on week, month on month. And every time we take a break from that activity, also, we do have a few come up and say that, why did you stop? When are you resuming it? We love that direction when we get that prompt to write on. And I completely agree. Otherwise, sometimes you wonder, what do you write about? But when you have a direction, it helps you to channelize your thoughts and you proceed further. And I would say, thanks to that, I now have a reasonable collection of poetries and short stories. And I also need to resume my writing, come back again. So there are some thoughts which are going on in my head, in fact, for the last couple of days, basis all that I'm seeing around and experiencing. So anyhow, let the stories or the poetries come, and then you will all know what was actually going on in my mind. So when we started with Culture Kona, we also felt the need to bring out a compilation of poetries of all our beloved poets.
at Motherhood Club. So the very first poetry anthology that got launched was in August of last year, Ila. Yes, 21. by the name Antarman. And we had 50 poets who were a part of it. And as they say, Dil Mange More, we then took the next leap of faith to bring in a compilation of 101 poetries by 101 poets from different backgrounds to create hope, एक उम्मीद जगाने के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो कैंसर से परेशान हैं, पीड़ित हैं। उम्मीदों का इंद्रधनुष, which was compiled by Ila, myself, and Dr. Indu Bansal, who's an oncologist herself. So poetry happened, and then we saw the love of story. स्टोरी लिखने का जो एक नया जुनून सा आया हम सबके अंदर कि भाई स्टोरी भी लिखनी है, तो कहानी लिखने का सिलसिला बहुतों का शायद मदरहुड क्लब पे शुरू हुआ। और हफ्ते के बाद हम देख रहे हैं कि कैसे वो जो कहानियां आ रही हैं वो इतनी खूबसूरत, इतनी इम्पैक्टफुल हैं कि पढ़ के लगता है कि अरे ये पढ़ के कहानी मजा आ गया। कई बार आप उस कहानी के अंदर अपने थॉट प्रोसेस के इमोशंस डाल देते हैं, कई बार आप सामने वाले के इमोशन समझते हैं। सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू लिटरेचर, चाहे वो कविता हो या कहानी हो। लिखता कोई है अपने भाव, अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस को, लेकिन पढ़ने वाला उसको अपने एक्सप्रेशंस और इमोशंस के हिसाब से समझता है। लेकिन जब आप उसको खुद सुनाते हैं तो शायद सामने वाला उसके एक्सप्रेशंस और इमोशंस को और अच्छे से समझ पाता है। तो ये रही है हमारी जर्नी लिटरेचर को लेके। और अब हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में आपको इला बताएंगी। जब कहानियाँ लिखना, पढ़ना शुरू किया, तो ऐसा कैसे होता कि हम पब्लिश नहीं करते हमारे मेंबर्स की लिखी हुई कहानियों को। तो ऐसे ही एक दिन एकता और मैं जब बात कर रहे थे आपस में, तो हमने कहा अरे हम वैसे भी सोच रहे थे कि एक और पोएट्री एंथोलॉजी लेकर आएँ, एक और काव्य संग्रह लेकर आएँ। फिर हमें लगा कि इतनी बढ़िया-बढ़िया कहानियाँ लिखने वाले हमारे पास में लेखक हैं, कहानीकार हैं, व्हाई नॉट ब्रिंग अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़। तो इस तरह से हमने सोचा और डिसाइड किया कि हम एक स्टोरीज़ का, कहानियों का एक संग्रह लेकर आएँगे। उसका नाम हमने बड़े प्यार से रखा कहानी जंक्शन। तो मदरहुड क्लब से जुड़े हुए कुछ कहानीकारों की चुनिंदा कहानियों का संग्रह कहानी जंक्शन आप सबके सामने बहुत जल्दी आने वाला है। और एक-एक कहानी जो है जीवन के, संसार के अलग-अलग रंग को लिए हुए है। अलग विचारधारा, अलग भाषा शैली, अलग इमोशंस, सब कुछ मिलेगा आपको स्टोरी जंक्शन में। तो जंक्शन नाम ही इसलिए रखा कि तरह-तरह की गाड़ियाँ, छोटी दूरी की गाड़ियाँ, लंबी दूरी की गाड़ियाँ, तरह-तरह के उसमें यात्री होते हैं गाड़ियों के अंदर, रेलगाड़ियों के अंदर। तो जो एक जंक्शन होता है, वो एक जमावड़ा होता है, पैसेंजर्स का, रेलवे स्टाफ का, ट्रेन के अंदर जो घूम रहे हैं लोग, जो सेवा कर रहे हैं परिचारक, उनका। तो इसी तरीके से कहानी जंक्शन जो है, इट इज़ अ जंक्शन ऑफ इमोशंस, जंक्शन ऑफ थॉट्स एंड मेजरली लिटरेचर के लिए हम लोग जो सब लोग प्रतिबद्ध हैं साहित्य के लिए, कि हम अपने आप को कोई एस्टैब्लिश साहित्यकार कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। हम सब सीख रहे हैं, लेकिन उसी सीखने के प्रोसेस को अगर मोटिवेट करना हो, जब मोटिवेशन चाहिए अगर किसी को, तो छपना ज़रूरी है। जैसा हमेशा कहते हैं कि you have to get published in order to be called an author. आप ऑथर तभी कहलाएंगे जब आप पब्लिश हो जाएंगे, जब आपका लिखा हुआ छप जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि जो लोग अपने लिखे को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो अपने लिखे हुए विचारों को छपवाना चाहते हैं, तो क्यों ना उनके इस प्रयास को थोड़ा और बल दिया जाए
और उसी का जो नतीजा है वो आप सबके सामने है, कहानी जंक्शन के नाम पे। एक तो ज़्यादा देर ना करते हुए हमें, मेरे को लगता है कि इसका कवर पेज जो बड़ी मेहनत से, बहुत सोच विचार के हमने आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो श्वेता सुंदर इज सेइंग द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। एब्सोल्युटली। कहानी जंक्शन। और क्या हम स्टोरी जंक्शन की भी बात कर सकते हैं आज? जी बिल्कुल। हम्म। तो जैसे हम हिंदी की कहानियों के लिए कहानी जंक्शन लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग स्टोरी जंक्शन भी लेकर आएंगे, जहां पर हमारे इंग्लिश राइटर्स हैं जो इंग्लिश में कहानियां लिखते हैं, उनकी स्टोरीज का कलेक्शन आएगा और उसका नाम होगा स्टोरी जंक्शन। वो कुछ ही दिनों बाद आपके सामने होगा, लेकिन पहले जो है हम लोग लाएंगे कहानी जंक्शन। और तो बहुत अच्छे इला अच्छे हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं। और हम पहले एक बार अपने जो व्यूअर्स हैं उनको नाम के साथ में सबका वेलकम कर लेते हैं। जी। वर्षा दीक्षित जी, रश्मि गोस्वामी जी, उमंग दीदी, मुकेश भटनागर जी, कमल जी, उमंग सरीन दीदी, रंजना जी, तपस्या, श्वेता सुंदर, ऋचा दिनेश शर्मा, और किसी के नाम पूजा अग्रवाल, हरमिंदर। तो सबका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, आई एम बस वेरी एक सवाल, एक्साइटेड। हाँ। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप कल्चर कोना को स्पीयरहेड करती हैं और जी। ऑब्वियसली हमारी जो पहली पोएट्री एंथोलॉजी आई थी, तो हमने उसका नाम अंतर्मन रखा था। बिकॉज़ अंतर्मन इज़ द इनर वॉइस ऑफ एवरीवन एंड हम चाहते थे कि लोगों की दिल की आवाज़ जो है वो सब तक पहुँचे। तो आपने समझाया कि कहानी जंक्शन क्यों? लेकिन कुछ तो और कारण होगा कि हमने इसका नाम कहानी जंक्शन दिया है। ऐसा क्यों? कुछ आपके थॉट्स होंगे, कुछ मेरे होंगे, तो आप पहले अपने मेरे शेयर थॉट्स तो मैंने बताए ओके, कि द जंक्शन ऑफ थॉट्स। junction योर of thought. इंटरप्रिटेशन, यस। हाँ। Yes. So my interpretation is that, each of us is at a particular junction of life or that phase of life का जो junction है with lots of roller coaster ride, with lots of ups and downs in life. And while we were reading through these stories, I think it further got validated that the name that is chosen for the Hindi as well as for the English is right, because the stories are near to real. Those are experiences at every junction of your life, full with emotions, passion, message. And I am a firm believer that there is no better way to convey message to someone through a story. When you share a story, the most complex topic or subject gets crystal clear in your head, एब्सोल्युटली। and the learnings that you get out of it is beyond anybody's comprehension. So that's my interpretation of Kahani Junction and Story Junction. So yes, now I'm sure even now even I am itching, and it's a very plain simple cover page of the book, because I think in simplicity is how it makes it more beautiful, rather than making it too complex in terms of words or pictures. So it's a very, very plain, simple cover page, which to us feels the most appropriate. So allow us to present that. So are we ready for it? And यस। yeah, so here we go. So this is the cover page of Kahani Junction, literally a junction of the train track where lot of stories get built up, like literally in a train when you talk to co-passengers, or if you go on a road trip, or you go anywhere, even in a meeting, that's also a junction basically. So this is what it is. So yes, very, very simple, and yet a comprehensive explanation. Thank you, Ranjana ji, thank you so much.
We are glad that you like it, and we will post this also on the page for each one of you to use it, share it, that you are going to be a part of it. The work is on in terms of the first set of editing is being done, and we are formatting it, getting it to its final stage. But I am sure, for those of you who've had anthologies in the past, आप ये रियलाइज करेंगे कि काफी मेहनत का काम होता है, इसमें समय लगता है। तो थोड़ा और इंतजार कीजिए। काम पूरी स्पीड से चल रहा है, राजधानी की स्पीड से चल रहा है, स्पीड से भी चल बट रहा है और शिद्दत से भी चल रहा है। शिद्दत से भी चल रहा है। वी आर ऑल्सो न्यू टू इट। We are also new to creating this beautiful piece of work by all of you. So please give us some time, and very soon this book full of love, stories, emotions will be there in your hands for all the co-authors. And we are very happy to take questions or answer, or if you want to know anything else about this and anything you want to add, Ila, most welcome to do so. बस अब आप इंतज़ार कीजिए और थोड़ा-सा धैर्य रखिए। आपने इंतज़ार किया है सबने, जो राइटर्स हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं, कब आएगी हमारी वो कलेक्शन, कब आएगा ना, आप जो कहानी जंक्शन है वो कब छप के आएगी। तो बहुत जल्दी हम लोग का पूरा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम खत्म करें। बट एक कविता को एडिट करना और कहानी को एडिट करना, उसमें थोड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट होता है कहानी के अंदर। तो उसको एडिट करना, फॉर्मेटिंग करना, उसको अपनी ठीक जगह पर ठीक तरीके से लेकर आना, क्योंकि भाई आप लोगों की मेहनत और हमारी मेहनत ये दुनिया के सामने ऐसे आनी चाहिए कि जब लोग उसको देखें बाहर से और अंदर जाकर जब उसको पढ़ें, किताब के पन्ने खोलें, तो लोग कहें वाह, क्या चीज़ छपी है। तो इसी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। तो जैसा एकता ने बोला, हमें थोड़ा-सा समय चाहिए और फिर आप सबके हाथों में आ जाएगा कहानी जंक्शन। And for all the English writers, I know it will take a little longer. We are first getting out the Hindi story anthology for the sheer love to the language that we all speak. हमारी मातृभाषा है. No other reason for any biasness towards Kahani Junction over Story Junction. Though a lot easier to edit the English compilation than Hindi, because laptop it become very difficult to do it. But we are parallelly working on them also. So be rest assured that both the books will soon be with you. And for now, it's just the launch of the cover page. Soon, once the book is ready, we will definitely do a book launch also. So thank you, everyone. Thank you, Tapasya. Thank you for your kind words. And we are glad that so many of you are part of these anthologies. To trust us, हम पे विश्वास किया है आपने और आप इस एंथोलॉजी का हिस्सा बने हैं, तो सभी का दिल से शुक्रिया. आभार। So, okay, so Ira, there is a question that has come, which has come from Harminder. How to write a story? Don't know. Can a session be held to know some basic about story writing, though it's not everyone's cup of tea? You are थैंक यू absolutely right. हरमिंदर, थैंक यू सो मच हरमिंदर फॉर दिस क्वेश्चन। और अब हम यही तो कहते हैं, सुझाव आपसे आने चाहिए सबसे। तो वी विल वर्क अपॉन इट एंड एक सेशन रखते हैं, एक बिल्कुल. छोटा सा वर्कशॉप रखेंगे बहुत जल्दी। आप लोग इनफैक्ट आइडियाज लेकर आइए। हाँ। इनफैक्ट इला, अगर आपको याद हो, एक हमारे स्टोरी ओपन माइक में we did talk about this very यस, very briefly from and took inputs from our story narrators who were our guests for that day, कि हम कैसे कहानियां लिखते हैं, क्योंकि सबका कहानी लिखने का एक अलग स्टाइल होता है. कई लोग अ, कहानी को सीधा सीधा प्रेजेंट कर देते हैं, कई लोग कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लाते हैं, कई लोग कहानी को बहुत रोमांचक ऐसे लिखते हैं कि आप उस पूरे दृश्य को देख सकते हैं. कई बार कहानी में एक ऐसे पड़ाव पे आके उसे छोड़ दिया जाता है कि अब आप सोच लीजिए कि आपको कैसे करना है. एंड तो कैसे बहुत करना है।
end कैसे करना है. And sometimes it just is abrupt because such is life, right? So there are different ways, there are radical thoughts. So yes, Harminder, thank you so much for this beautiful idea. And of course, I won't say that we will do the workshop ourselves because we are also learning. So if any one of you who is a story writer and would like to be a part of that session to share inputs, please do reach out to us. We'll be very happy to have you share and talk about this and share our inputs. Or maybe we don't even need someone as an expert. Maybe all of us who are interested can come We together. can all get together and then share what Our prompts us thoughts. to write, how do we go about it, and this is all. And we can Absolutely. all exchange notes and better ourselves for the next story. Absolutely. Absolutely. Definitely. In fact, let me tell all of you, Ela and I do that. We do take guidance from each other that, okay, this is what I'm thinking. This is the plot. This is how I want to do it. What do you think? So then, so we discuss, we share. Sometimes while you're talking, you get an idea. Oh, something can be done on this. So, yes, as I say, it takes two to tango. So, why not find your buddy writer? Maybe that could be another concept that one can talk about, to Yes, have a buddy writer who can help you be more impactful. And I always say that please have that one buddy, if not more, who's there to help you, check you, correct you, and stand by you. It just makes life so beautiful. absolutely. So आखिरी कमेंट पढ़ देते हैं and then we shall say goodbye. Yes. ओके, कमल जी कह रहे हैं आवरण पृष्ठ के सार्वजनिक अवतरण के लिए हार्दिक बधाई. बहुत बहुत शुक्रिया. तो थैंक यू सो मच एंड वी फील प्राउड टू हैव ऑल ऑफ यू एज आवर मेंबर्स. एंड जल्द मिलते हैं दोबारा से. तब तक के लिए सब लोग जल्दी अपना मिलेंगे. ध्यान रखिए Yes. एंड टेक केयर एवरीवन टिल वी मीट अगेन. बाय बाय. बाय बाय, नमस्कार. जुड़ने के लिए सबका आभार.